कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? स्विमिंग। Over 15,000 years ago. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जाएंगे आदियोगी का बैंगलोर वाला स्टैचू। हमारे घर से अराउंड 1.5 आवर का डिस्टेंस है। हमने शिवरात्रि के टाइम पहले सोचा था कि हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन भीड़ को अवॉइड करने के लिए स्किप कर दिया। एंड देन अब जाकर के मौका मिला है। बहुत ही सुना था ये लाइट एंड साउंड शो के बारे में। लास्ट का 4-5 किलोमीटर्स में बहुत ट्रैफिक है, तो अभी आप देखो यार सामने। तो ट्रैफिक खुल गया 5 मिनट में। क्या हुआ क्या हुआ? उनका खाता रिकॉर्ड हो गया। ओह अच्छा, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब हो रहा है। नंदिल से भी आगे में लगभग 70-80 किलोमीटर है। रोड का कंडीशन अभी बहुत ही खराब है। लास्ट लेग पे लास्ट का 4-5 किलोमीटर जो है वो आपको ऐसा मिलेगा। ये देखो पूरा टकटकाए हुए हम लोग। तो लगभग 6:15 बजे है और हम लोग अभी पहुँचे हैं। और ये रहा पीछे आदियोगी का स्टैचू। खा गया वो देखो। और मेन एंट्री उस साइड से है, हम लोग शॉर्टकट से आ रहे हैं। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When intensity peaked, he became utterly. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed.
Devi Parvati, seeing Adiyogi, reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Yogi said, just drink of me, which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. बाय 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 बाय। थैंक यू अगले वीडियो में मिलते हैं